most esteemed faculty, Neeraj Nachiketa, sir. Sir, you are an inspiration for us and you are so humble and genial. Now, before commencement of class, I want to share some positive thought with you all. That is, every brilliant experiment, like every great work of art, start with an act of imagination. And very important is, personal development is a major time saver. The better you become, the less time it takes you to achieve your goal. Now, all time is yours, sir, and over to you, sir. Thank you. Many thanks. And you have said a very good thing, right? Imagination, the world of imagination. And science and technology requires that imagination. You have to imagine a lot of things there, right? So that's what what she has said, what ma'am has said is really good. So I was late because tomorrow is my last day here in Jaipur. So I went to a very famous mithai dukan, Mistan sweet house. It's called Rawat Mistan Bhandar, Sindhi Camp. I'll show you something, what I brought. You see here, let me show you there. This is the, what is famous in Jaipur? Yes, anybody? Those who are from Jaipur, what is famous in Jaipur? You know what is this? What is this called as? Ghevar, yes. So I got Ghevar for my family. It's all Ghevar is there, Rawat. That's what I got it. There's a place called Sindhi Camp, right? It is called place called Sindhi Camp. Sindhi Camp जगह है. मैं मेट्रो से गया होता. क्लास खत्म होने के बाद मैं मेट्रो से वहां गया और राजस्थान में प्याज कचौड़ी मिलता है. प्याज कचौड़ी made of प्याज. Then dal kachori, right? I don't know how many of you are foodie. I am a foodie person. wherever I go, I try to enjoy the local cuisine, right? Local cuisine and all. I'm a very travel person. I travel a lot. I meet people a lot, right? Many people I come into contact, right? And I love to meet people. मैं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ. और ये बात ये भी है, मैं स्टूडेंट से भी मिलना पसंद करता हूँ. Like you all people, right? All of you. One day we will meet, right? So जब दिल्ली में क्लास होगी तो आप जरूर आना. You all should come to my class. ठीक है? हम लोग physically मिलेंगे. We will interact with each other. Those who are far away, I cannot but anywhere in life, anywhere you come across, right? So we will meet there. ठीक है? So I think with a positive note, right? We'll start. किसी को भूख तो नहीं लग रही है? Anybody feeling hungry? Right? Not hungry there? Okay. That's right there, right? You all are very lovely students, right? You all are very nice students. है ना? आप सभी लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, where you met me? Yeah, Bhanu, I met him. Bhanu, I know him. Okay, Bhanu, I have already met him. Others I have not met. Okay. मिलेंगे, हम लोग जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, right? We will meet one day, right? And we'll meet in Delhi. दिल्ली मिलेंगे. कितने लोग दिल्ली वाले हैं? दिल्ली में कितने लोग हैं? Raise your hands. How many are from Delhi? Okay, Rohit is there. Right, Shubham is there. Sambhav Goyal is there. Mohammad Hussain is there. Okay, Kumkum Gupta is there. My goodness, इतने लोग हैं दिल्ली वाले, है ना? तो हम जरूर मिलेंगे. Kunal is there. Sorry, Komal is there. Very good. मुलाकात होगी, है ना? एक दिन मुलाकात होगी, ठीक है? और अभी तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन है. ऑफलाइन में आपको पढ़ने में और मजा आएगा. When I teach in the offline class, it has a different type of environment. Online class is different, offline is different, right? But I am thanking all of you. मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हो. बहुत लोग तो
अभी सो रहे होंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद वंस यू हैव अ फूड, गहरी नींद में चले जाते हैं, राइट। आफ्टर हैविंग फूड, ये टाइम इज 2 o'clock, 2 बजे खाना खाने के बाद चादर तान के सो जाते हैं, है ना। लेकिन पता है, स्टूडेंट्स के लिए नींद अभी नहीं होनी चाहिए, नींद अभी दूर होना चाहिए, राइट। यू हैव टू बी कंटिन्यूसली ऑन योर पाथ टिल यू रीच योर गोल, ठीक है। सब कुछ भूल जाना है, ये चीज है। एनीवे, आई नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। अच्छा, एक चीज है जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। रिसेंटली समथिंग वाज इन द न्यूज, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस। Anybody in the classroom can tell me who is Dr. VK Gupta? Dr. VK Gupta in the news, कोई बता सकता है कौन है वो? VK Gupta, a person was in the news. Can anyone tell me who is the VK Gupta? Anybody in the classroom? I'll show his photograph. I'll show his photograph here. Anybody in the classroom who is Dr. VK Gupta? Yes, Dipesh, you have raised your hand. Dipesh, you can unmute yourself. He is Dipesh Gupta. Colonel, sorry, not Dipesh, I'm sorry, VK Gupta. He is a doctor, Dr. VK Gupta, from, he's a colonel rank from Indian Army. Anybody in the class who can tell me why this person was in the news? यह व्यक्ति क्यों चर्चा में था, समाचार पत्रों में क्यों इनका नाम था? यस, संजीव दत्ता, सोनिया दत्ता, आई एम सॉरी, सोनिया दत्ता, प्लीज सोनिया दत्ता, अनम्यूट योरसेल्फ सोनिया. Sonia, you can unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sonia. How are you? Good? I'm good, sir. All well? Well, sir, I have Um, just read a day ago or something. Mhm. He is the first person to receive the SART T cell therapy, and he's becoming like he's not having the cancer anymore. Correct. And this therapy is also good for cases where the relapse can occur. This is Excellent. currently happening in Tata Memorial at Good. Mumbai. Very good. Very good. Excellent, Sonia. Clap for Thank you. you, sir. Good. Well done. As everybody has heard, right, what Sonia has said, he is a person to recover fully 100% from cancer, blood cancer, leukemia. And he is the first Indian to receive a very important therapy called CAR T cell therapy. Now, CAR T cell therapy is in the news for last 5 years. Last 5 years, it is in the news. And so far, UPSC has not asked any question on that. ये चर्चा का विषय रहा है, न्यूज में रहा है, लेकिन अभी तक परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये पहले भारतीय हैं जो एक तरह का कैंसर होता है, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL, ऑल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, blood cancer. And he has received that T cell therapy, T cell, B cell, T cell. These are lymphocyte. They are the types of WBC, white blood cells. And first time in India, indigenous, क्या चीज है? Indigenous therapy has been developed. Indigenous therapy. इसको पहली बार वर्ल्ड वाइड डेवलप करने वाला कंपनी जो है नोवाटिस है. लेट मी राइट हियर. Novartis company, right? This one. First time this treatment was developed by Novartis, right? This means that Novartis has developed that. Novartis company, and it got US FDA approval. It received the US FDA approval.
What is lymphocyte? Is a type of WBC, white blood cells. You know, blood has got RBC, WBC, platelets. Is type of WBC. WBC है जो कि हमारे डिफेंस के लिए, इम्यून पे काम करता है, इम्पोज है ना, इम्यूनिटी पे काम करता है, हमें एक डिजीज से बचाता है. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. और पहली बार जो ये नाम है काइमरिया, स्विस फार्मा, स्विट्जरलैंड बेस्ड स्विस फार्मा हैज डेवलप्ड. वेयर? यूएसए. कहां पे? अमेरिका में. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ थेरापी? अगर इसके थेरापी की कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ थेरापी इज 4 करोड़, 4 करोड़ खर्च आता है. अब इंडिया में डेवलप किया गया है. इंडिया में यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे विच इज प्रीमियर यूनिवर्सिटी, राइट? IIT Bombay, there's a biomedical department, biotechnology and biomedical department, and I'm alumnus of that department. I've studied from this department. Our professors, our scientists, is also a very pride moment for me also there. Our professors who taught us, there was IIT Bombay, and there's a Tata Memorial Center, that is a cancer hospital in Mumbai, Tata Memorial Cancer Hospital. And its indigenous therapy is made, which have reduced the cost. The cost has been reduced to, you know how much? Rupees 40 lakh. लेकिन अभी भी ये महंगा है, अभी भी कॉस्टली है. Every person cannot get to 40 lakhs. 40 lakhs still, you know, is a very high cost for common man. आम आदमी के लिए ये भी अभी महंगा है. हाँ, लेकिन मुझे पता है, ये मुझे भरोसा भी है और सबको ये कि समय के साथ इसका प्राइस और कम हो जाएगा. मे बी इन कमिंग ईयर्स इट में रिड्यूस टू 4 lakhs. इट में कम टू 4 lakhs, है ना? तो ये जो कंपनी है इसने डेवलप किया है, पहली बार किसने डेवलप किया? नोवार्टिस ने. ये किससे जुड़ा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी. कौन से एरिया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी. लिंक्ड टू बायोटेक्नोलॉजी. देयर इज समथिंग कॉल्ड जीन थेरेपी. T cell is acting as a here part of this. यहाँ जो वर्ड है CAR, chimeric antigen receptor. What is CAR? Chimeric antigen receptor, which bind with the cell, right? उसके लिए वहां पे किया गया. But you have seen this one. Is a yes, जैसे Dr. Tata Memorial, right? And this was here. Is free from cancer cell. Normally, you know, for blood cancer, what type of treatment is done? Bone marrow transplant. What do you do there? Bone marrow transplant. See what happened in the bone marrow. We have a long bone. We have a long bone. So where there we have a stem cell. What do we have? Stem cell. Right? Lymphatic stem cell, which makes WBC, RBC, and all this. And there's cancer in the cell, that the WBC which is not getting formed. So normally people has to go for bone marrow transplant. But there are a lot of problems, challenges for getting bone marrow transplant. बोन मैरो ट्रांसप्लांट मिलने में बहुत दिक्कत आती है. उसके लिए डोनर चाहिए, फिर इम्यूनिटी मैच होना चाहिए. ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है CAR T सेल थेरेपी से, राइट? ये पिछले 5 साल से न्यूज में पहला भारतीय है जो कि टोटली रिकवर हो गया. नाउ यू कैन सी हियर, कॉमर्शियल यूज के लिए है ना, 42 lakhs जो कॉस्ट है वहां पर रिकवर. And the name of the company, what is the name of the company? ImmunoAct. What is the name of the company? ImmunoAct. Right? This is ImmunoAct, IIT Bombay,
Tata Memorial Hospital, V.K. Gupta. He's the first to become 100% free from cancer. Which cancer? Blood cancer. ऐसे पढ़ना है, इस तरह से पढ़ाई करना है, करंट के चीजों को अपना बेस बनाना है और उसको लिंक करना है थियरी के साथ. You have to connect with the syllabus. You have to connect with the theory part. That way you have to go ahead. And every year in the UPSC prelims exam, biotechnology questions are asked. Medical biotechnology questions are asked. Right? That's what you find here. And what is the name of the company? ImmunoAct. It's an Indian company. Initially, it was developed by Novartis, which is for MNC, multinational company. But it is the ImmunoAct. Right? Now let's look at here. If I just go to this one, if I just type here, ImmunoAct, right? This company, right? This is a company. So they are pioneering gene therapy. What is CAR T cell therapy? Is a gene therapy. It's basically a gene therapy. Abnormal gene can be cured. See, this is the company. See, when you read something in the news, ठीक है, जब आप कोई भी चीज न्यूज में पढ़ते हो आप, तो आपको क्या करना है? You have to go to the respective website. Biotechnology development. You can say it is a startup. This is a basically startup. India is very soon getting into a lot of development in the field of biotechnology. ठीक है? And you can see here, ImmunoAct, startup there. Sign, SINE. That is in IIT Bombay, which basically support the startups, entrepreneurship, venture. Right? Then you see, first CAR T cell therapy. दिया हुआ है ना, ये चीज है यहाँ पे कंपनी कॉमर्शियलाइजेशन के लिए. Then you can see here what is given here. This India ranks second global cancer mortality. I have discussed in the classroom about cervical cancer in women, cervical cancer. Now Cervavac vaccine has been developed. Interim budget of finance minister Nirmala Sitharaman has announced that to immunize girls with the Cervavac. Serum Institute of India. We have so many such companies. Now see here, leukemia. Can you see here, leukemia? हमारे देश में ब्लड कैंसर के भी केसेस हाई हैं, है ना? और कन्वेंशनल थेरापी जो होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? एक ये CRT सेल थेरापी है, जीन थेरापी है, और दूसरा होता है स्टेम सेल. कौन सा सेल? स्टेम सेल. स्टेम सेल्स आर दोज सेल्स which can divide, program to form any body cell. किसी तरह का बॉडी सेल बन सकता है. तो यहां पर ये चीज है, लिम्फोमा, हाई रिस्पॉन्स रेट से. नॉर्मली कैंसर में क्या यूज करते हैं? कीमोथेरापी. नॉर्मल कैंसर ट्रीटमेंट कैसे होता है? कीमोथेरापी, ट्यूमर्स एंड ऑल दिस वन. यहां पर जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बायोलॉजिकल होता है, मेडिसिन होता है. पहली बार T सेल को यूज किया गया है टू ट्रीट दिस डिजीज, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है. ये इंडिया का डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस फील्ड में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर आवर साइंटिस्ट देयर, आवर कंपनीज, राइट? तो वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम हियर. क्योंकि ये चर्चा में था, न्यूज में था, तो मुझे लगा कि मैं एक बार डिस्कस करूं. लेट मी डिस्कस अबाउट दिस, राइट? आर यू ऑल कंफर्टेबल? इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? इस तरह से चीजों को पढ़ना है. ये सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करो, आप चीजों को आप एक्सप्लोर करो, आप, है ना? यहाँ पर देखो आप, ये सारी चीजें जो है एक्सप्लोर आउट देयर, you'll get to know more about it. ठीक है? यहाँ पे जैसे ये चीज है सारा, राइट? अब ये नेक्स्ट कार, ये है ना मेथड दिया हुआ है. दिस न्यूज वाज गिवन.
It was in the news, right? That was in the news here. But again, you can see here this one. Corporate video. As a company video. Right? This company video is given. Right? This is given here. Then you have other things here. Symposium and all this. ध्यान रखना है. Now let me go to the main part of it. जो topic हम लोगों ने पढ़ा था. Let me get into the topic here. So just I told you that, right? That we need to go to such kind of topics there and study about that. So we have discussed about this space technology, right? So last class I have gone to Chandrayaan 1 and 2, right? Chandrayaan 1, 2, this all. We have covered sounding rocket. We have covered all these kind of topics in the class, right? We have discussed NISAR mission, right? Synthetic aperture radar. We have discussed that. Chandrayaan 1 mission, Chandrayaan 2. We failed in Chandrayaan 2 landing mission, but we were successful in Chandrayaan 3 mission landing part. Vikram lander there and Pragya rover there. And I said, why South Pole? We have discussed that. Why South Pole? We have covered that. Then Mangalyaan, right? We have discussed the Mangalyaan mission. Now we are preparing for second Mangalyaan. At the same time, what India is planning for? We are planning for Venus. Venus is our twin planets, right? That second Mangalyaan mission on the card, we are going to that. Like, for example, Mangalyaan second mission here. So what is explore out? हमेशा इसरो का जाना है. अब ये चीज है ना, मॉम 2, Mangalyaan 2. It was in the news. Whatever has come in the current affairs, you have to always be aware. What is given here? Study surface atmosphere, camera, same as Chandrayaan, HYSI, mineral composition of Mars. All this will be there. So we are going for all this kind of thing here. Mangalyaan 2 ISRO will start on this one here. And you'll find all these things being covered. Mars orbiter mission there. And all the news has covered here. Right? Now another one, Gaganyaan to Mangalyaan 2. The entire list is there. Right? And the launch date, if you look at here. So we have again planned for 2024. So now tell me, third quarter of 2024, October, which all missions you have planned? और कौन सा मिशन है? मैंने कल क्लास में बताया था. और कौन सा मिशन हम लोग करने जा रहे हैं? अभी बहुत लाइंड अप है. मैंने कल क्लास में बताया था आपको. गगनयान मिशन के लिए हम लोग क्या भेजेंगे? व्योम मित्रा. कल मैंने बताया ना, व्योम मित्रा, सेमी ह्यूमनॉइड, unmanned without a human being. Will send Vyom Mitra in a crew module. We'll do the testing. If everything goes very well, then we'll go for next year Gaganyaan mission with human astronauts. है ना, ये चीज है ना. फिर हम ह्यूमन एस्ट्रोनॉट का करेंगे. तभी हमारा क्या प्लान है? गगनयान का मिशन पे व्योम मित्रा को भेजने का प्लान चल रहा है. ये सब लाइंड अप है ना. ये सब हमारा लाइंड अप है. यहाँ पर ये सब न्यूज में रहा है. वहां सारा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. फिर मैंने अभी क्या बताया? अभी मैंने बताया क्या? वीनस, क्या नाम है उसका? शुक्रयान. दिस विल बी इंडियाज नेक्स्ट आफ्टर प्लैनेट मार्स विल गो टू Venus. This part is there. Venus mission here. Shukrayaan.
right? Shukriyan, if you look at here, Hindustan Times, that is given here. Anytime, NDTV. Another ambitious project, right? This is what you find here. Upcoming winners. You'll find all this one. ये सब न्यूज में था, है ना? And when we are planning here, if you look at launch date here, Shukriyan, so when the Shukriyan launch is there, now you can see we are planning for 2028. And I have told in the classroom 2028 what India is going to start. Building space station, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS की शुरुआत कब होगी? 2028 में। उसी समय हम कहाँ भेजेंगे? शुक्रयान। मंगलयान तो इसी साल होगा। मंगलयान MOM 2 will be this year, and then we'll be sending this one, another one, right? सारे चीजों को पढ़ना है, ये सारी चीजों को जानना है ना, राइट? तो मैं अभी एक काम ऐसा करता हूँ, लेट मी डिस्कस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, लेट मी कम टू दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है, राइट? आई गेट बैक टू दिस वन। दो तीन और अच्छे टॉपिक है जो आपको तैयार रखना है प्रीलिम्स के लिए। वन इज दिस वन which I would like to add here. INO. What is INO? Indian Neutrino Observatory. Now this is ground-based study there, right? This is ground-based and it is important for the exam. See, Chandrayaan 3 we will get back, but Chandrayaan 3 already question has been asked. Now I have to look for some new topics. आपको नए टॉपिक्स को देखना पड़ेगा जो पिछले 4-5 साल समाचार पत्रों में जहां यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूट्रिनो। The neutrino, what is there? Question is that what is neutrino? I'll come to the project, but what is very important? What is neutrino? What is neutrino? So what is neutrino? Neutrino, right, is a particle. Is a subatomic particles. Even smaller than proton and electrons. Subatomic particle, right? Traveling with the speed of 2 into 10 power 8 meter per second. What is the speed of light? What is the speed of light? 3 into 10 power 8 meter per second. It travel very close, right? Very close to the speed of light. And what is another important thing? It passes through most of the object. Right now, millions of neutrino particles are crossing our body. अभी हमारे शरीर के थ्रू ऐसे कई न्यूट्रॉनो क्रॉस कर रहे हैं. They're crossing our body. We cannot see them. हम देख नहीं सकते उसको. It all pass through object. कॉस्मिक बोलते हैं, जो कि यूनिवर्स. कहां से आ रहा है? यूनिवर्स से आ रहा है. They're coming from universe. They're crossing our human body. They pass through everything, right? Rock, soil, whatever. So what is very important here, when you talk about neutrinos here, ठीक है? How many types of neutrinos are there? So I'm giving you the notes in terms of question answer. ठीक है? How many types of neutrinos are there? तो मैं लिखता जा रहा हूं और आप कॉपी कर लो आप इसको. साइंटिस्ट का कहना है ये 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के हैं.
ठीक है। चार्जलेस होता है, चार्ज होता नहीं है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पहला आता है जिसको कहते हैं यहाँ पर मुऑन। मुऑन इज अगेन, when you say muon is again a fundamental subatomic particles, right? Muon is a fundamental particles there, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान हमेशा रखना है, हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है कि अब यहाँ क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, कि क्या यूपीएससी में इतना डेप्थ में पूछ सकता है, क्या न्यूट्रॉनों के नाम पूछ सकता है? नहीं, नहीं, इट विल नॉट आस्क, राइट? इट विल नेवर आस्क टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल, विल नेवर आस्क देयर। क्यों मैं बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, राइट? सो दैट यू आर अवेयर ऑफ दोस काइंड ऑफ नेम देयर। व्हाट इज, उसमें दूसरा टाइप क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। एक जो है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड जो है, लेट मी जस्ट राइट हियर, सेकेंड, सॉरी, सेकेंड, जस्ट सेकेंड हियर, लेट मी गो टू दैट पेज। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी, सॉरी, अभी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि, जस्ट वन सेकेंड, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज that when you talk about such kind of particles, although the name is electron, but it is not negative charge, remember that. What is the word here? The word is neutral, neutrino. They doesn't have any charge. So when you say electron, what is electron? Size, based on, and they generate from electron. That's what source is there. जहां पर ये आता है, आई एम राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये याद नहीं रखना है, मैं केवल आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, ठीक है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल आपके बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं टाउ, बोलते हैं TAU, टाउ। टाउ न्यूट्रिनो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहां बहुत इंपॉर्टेंट है? वेयर यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन, सोर्सेस, कहां से बनता है। तो व्हाट इज दिस वन? सो दे आर चार्जलेस, है ना, they are chargeless, but now question is that are they massless, are they without mass? That is wrong, it also has mass, है ना। Chargeless means no charge, neutral, that is a neutral. You know electron is a negative charge, in neutral है, no charge. But what is very important, but they have mass, they have mass. Now mass is इसका जो मास होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बाई, यहाँ एक वर्ड होता है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, और उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है? इट हैज बीन गिवन नोबेल प्राइज, आई एम राइटिंग द वर्ड हियर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड न्यूट्रिनो ऑसिलेशन दैट गिव द मास, एंड यू कैन सी हियर, अगर मैं इसका गूगल सर्च करता हूं मैं, इफ यू सी हियर, इफ आई जस्ट टेक यू टू दिस वन, नोबेल प्राइज हैज बीन गिवन, जापानीज साइंटिस्ट, है ना, दिस ऑल थ्योरेटिकल फिजिक्स, यू नो, थ्योरेटिकल फिजिक्स, नोबेल प्राइज न्यूट्रिनो। अब यहाँ पर ये चीज है कि क्या ये हमें जानना है, हमें समझना है, क्या वहां क्वेश्चन आ सकता है? तो ये देखो आप, जापानीज साइंटिस्ट है तकाकी काजिता, राइट, यू कैन सी हियर, तकाकी काजिता ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, जापानीज साइंटिस्ट। सुपर कैम्यूकैंडे एक्सपेरिमेंट, एंड ऑर्थर मैकडोनाल्ड ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी एट किंगस्टन कैनेडा फॉर their work on the Sudbury Neutrino Observatory. See, what is the word here? Observatory. Worldwide there are many observatories are there. I'll come to your point. मैं अभी बताऊंगा क्यों न्यूट्रिनो पार्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे हमें क्या पता चलता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब यहां भी ये सवाल उठता है, क्या हमें वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है? नॉट इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैज्ञानिकों का नाम याद नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट देयर. So what I'm saying here, that this they have a they have certain type of mass, but mass is very, very small, right? Now what is very important, where they are formed, where neutrinos are formed. So obviously they will be formed in nuclear reactions. What is the answer here? Nuclear reactions. What happens at the atomic scale? Nuclear reactions वहां पर होता है, राइट? अब जैसे ये चीज है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, अब कहां कहां होगा? पहला आपको पता है, स्टार्स, उसी में एक स्टार कौन सा है? हमारा सन है. आवर सन इज a star. Then also, so this is a cosmic neutrino coming from universe. सन में क्या है? सोलर न्यूट्रिनोस which is coming from sun. और एक होता है एटमॉस्फेयर, ionosphere. You all know about ionosphere, when the radiation bombard ionosphere in the atmosphere. So here we have a atmospheric neutrino, right? Then this one, nuclear reactor. Nuclear reactors. Where we use nuclear reactors? Power generation, nuclear power plant. कहाँ का इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तारापुर, ट्रॉम्बे, काकड़ापार, नरोरा, काइगा, रावत भाटा, कुडनकुलम, कलपक्कम. वी हैव न्यूक्लियर रिएक्टर्स, राइट? तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहां से भी जनरेट होता है. ठीक है. अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिनो में क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई द साइंटिस्ट वांट टू स्टडी न्यूट्रिनोस? सो बेसिकली यहां पर जो है, what is significance? The question is that significance of studying neutrino particle. Why scientists are studying this kind of neutrinos? So answer here is that to understand cosmic events such as, one is that this one, supernova, right? To find out न्यूट्रॉन स्टार. हमारे यूनिवर्स में न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह होता है, तो वहां भी फॉर्म होता है. फाइंड आउट न्यूट्रॉन स्टार्स मेड ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स. अनदर थिंग इज दैट टू डिटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टू डिटेक्ट what is very important, anti-particle, particle anti. So what is anti-particle? Like anti-hydrogen, anti-helium. What is anti word means? Every this particle, there's a proton will have anti-proton. Electron has something called positron. So what is the meaning of that? Particle and anti-particle, right? Or you can say simply antimatter. What is called here? Antimatter. One is the normal matter. What is normal matter? Matter, hydrogen, helium, कार्बन, नाइट्रोजन. ठीक है. और दूसरा क्या होता है? एंटी मैटर होता है, मेड ऑफ एंटी पार्टिकल्स. व्हाट इज एंटी पार्टिकल? दे हैव सेम साइज, सेम मास, बट डिफर इन चार्ज. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, positron positive charge. Size is same, mass is same, only charge is different. Electron negative charge, positron positive charge.
प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, एंटी प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये माना जाता है कि यूनिवर्स में एंटी मैटर भी है। जब यूनिवर्स बना था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, मैटर एंड एंटी मैटर, ज्यादातर जो हम गैलेक्सी देखते हैं तो हमें हमें मैटर दिखता है, हाइड्रोजन, हीलियम, स्टार्स, गैलेक्सी। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या एंटी मैटर भी होगा, वो कहाँ है? तो मुझे न्यूट्रॉनों से पता चल सकता है, हमसे खोज सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दैट। इवन यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एरिया है, आई एम राइटिंग हियर टू सर्च समथिंग कॉल्ड डार्क मैटर। ये सब कहीं ना कहीं न्यूज में होता है, डार्क मैटर। व्हाट इज डार्क मैटर? व्हाट इज डार्क मैटर? कोई भी बता दो। यस, एनीबडी इन द क्लासरूम कैन टेल मी। गौरी शंकर धाकड़, आप लाइब्रेरी में हो या कहीं हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो आप। गौरी शंकर, क्या होता है डार्क मैटर? क्या है? व्हाट इज डार्क मैटर? मैंने बताया ना कि हर क्लास पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, व्हाट एवर आई एम टीचिंग, बिकॉज देयर वेयर यूपीएससी कैन डेल्व इनटू एंड आस्क द क्वेश्चन। और मैंने क्या देखा अभी करंट अफेयर्स के मटेरियल्स में, ये गायब हो गया, दिस टॉपिक है डिसअपियर्ड। और जहां डिसअपियर हुआ, यूपीएससी ने वहां क्वेश्चन पूछा, वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ। यस, प्रतीक्षा उपाध्याय, यस मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon, good afternoon. Yeah, How are you doing, sir? I'm really good. आज तो मैं रावत का घेवर खाऊंगा। आज आज मैं बहुत खुश हूं मैं। ठीक है, आप कैसी हो? हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, सर. बढ़िया। आप कहाँ पे हो? दिल्ली में हो या किस जगह सर, पे हो? वाराणसी. ओ मैडम, काशी विश्वनाथ, राइट। बनारसी का तो पूरा रूप ही बदल गया, राइट। अब गए, अब जाती है मंदिर तो गई होगी वहां पर ना, राइट। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, कैन यू हियर मी? Hello, sir. Am I audible to you? Yeah, now audible there. I was Okay. talking about Kashi Vishwanath. So Banaras Yes, is yes. a very nice place. Lanka, BHU is there. You know that? Banaras Hindi Yes, Road. sir. गई है आप लंका में? जी, sir. गई है? वहाँ एक मंदिर भी है, बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर है, कौन सा मंदिर है? आई थिंक बिरला मंदिर होगा। मोर देन 10 years बैक आई वाज देयर। सो और एक किला है वहां पर, वो नदी क्रॉस करने के बाद एक फोर्ट है, क्या नाम है उसका? लंका में ही, जब वो बीएचयू के पास एक रास्ता है, वहां जाते एक वो पुरानी किला है वहां पर। सर 80 नदी कह रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, क्योंकि बहुत साल पहले मैं गया हुआ था तो मुझे वही यस सर. 80 नदी क्रॉस करके एक छोटा सा किला है वहां पर, फोर्ट है। यस सर, रामनगर फोर्ट. कौन सा फोर्ट है, क्या प्लीज बताओ? सर रामनगर फोर्ट. हाँ राइट राइट, रामनगर फोर्ट, यस राइट। सर. तो वही मुझे याद आया। अच्छा, यस, आई गेट बैक टू द टॉपिक हियर। यस यस, सर. प्लीज टेल मी व्हाट इज डार्क मैटर? Sir, dark matter is composed of that particles that do not absorb, reflect, or emit any light. So they cannot be detected by observing AMR. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड। Okay, clap for you Thank also. you, sir. Good, excellent. Good, keep it up. So, to everyone, let me tell you here, one of the mystery of the universe is that about dark matter and dark energy. See, if you look at composition of the universe, you take the composition of the universe, normal matter is just 4 to 5%. This is a normal matter. Hydrogen, helium, and all this matter, whatever the galaxies are made, these are just 4 to 5%. Why we call dark? Dark doesn't mean something. Dark here means hidden. Unknown. Dark means unknown, hidden. 96% of our universe is hidden. We don't know about them. And out of that, here, if I just in this graph, 27% consists of dark matter. Imagine that more than matter we have a dark matter.
normal matter, hydrogen, helium, everything, stars, galaxies are just 4 to 5%. 27% is the dark matter, higher than this. That means whatever we see in vacuum is not vacuum. It's not vacuum. Something is there, right? And remaining thing here, 69%. There's a form of energy called dark energy. There's a form of energy called dark energy. What is dark energy? Which is tearing apart the universe, which is resulting into the expansion of the universe. You know, the current theory says universe is expanding. Hubble's law. You know, Hubble's law. Universe is expanding there. We don't realize. By on the earth, we don't realize that there's expansion. But universe is expanding fast. So there is one form of energy called dark energy, mysterious energy, which is repulsive. And one form of matter, which is also made of atoms, some type of atoms, some type of particles. है ना, जो हम नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं या कोई भी चीज का बात करते हैं, नॉर्मल मैटर हम हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनकी बात करते हैं. बट देयर आर जो डार्क मैटर है, दे आल्सो मेड ऑफ सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट देम. और रिसेंटली कई सारे स्टडीज किए गए, बहुत सारे स्टडीज हैं जो कि डार्क मैटर को ढूंढा गया इनडायरेक्ट. एंड व्हाट प्रतीक्षा हैज सेड, राइट, व्हाट प्रतीक्षा हैज सेड, she has given very important information. It does not interact with light. Dark matter does not interact with light. It neither absorb nor emit, right? It has no interaction. That means what? Dark matter is not black hole. You know that? Black hole nahi hai. Black hole can absorb everything. Black hole absorb light. Dark matter does not absorb light. इसको स्टडी करने के लिए एक तरीका है, वन वे बाय विच साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स कैन अंडरस्टैंड डार्क मैटर, दैट इज अ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ठीक है. और दूसरा तरीका है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कैन टेल अस अबाउट डार्क मैटर, राइट. डार्क मैटर कैसे पता किया जाता है? एक तरीका है लेंसिंग बोलते हैं. ये वेरी गैलेक्सी हैज अ डार्क मैटर and when the light is passing by that, so what will happen? The light will not enter the dark matter. Light will just surround it, cross by, just like a lens. गैलेक्सी का दो तीन इमेज है, तो कुछ तो वहां पर है जो लेंसिंग कर रहा है. उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग है. एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन, if there is a mass, there will be gravity. Something is there. So neutrino particle can be a gateway. You understand that? Neutrino particles can be a gateway to understand universe. है ना, वो समझ सकता है वहां पर. तो इसके लिए बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज हैं. क्या क्या है? ऑब्जर्वेटरीज हैं. द मेनी मल्टीपल ऑब्जर्वेटरीज आर देयर. इसमें एक नाम आता है, जो ऑब्जर्वेटरीज में मैं एक नाम रखना चाहता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड आइस क्यूब. UPSC has already asked a question. Ice cube. Where is that? Is Antarctica. In Antarctica is a neutrino particle detector is there. Deep into the ice. What is cube? Cube means here this one. 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer गहरा, deep, 1 kilometer length, and 1 kilometer width. Imagine करो कि बर्फ है. This is all ice, and under this particular, under this it has been formed. This is the surface. Is beneath the surface. This is a detector. The name is given ice cube.
क्या जी डिटेक्टर है? न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल को रोकने के लिए हमें कहां जाना होता है? अंदर जाना होता है। वी हैव टू गो इनसाइड द अर्थ because they move very fast and they cross every object. They cross every object. They move very very fast. वो बहुत तेजी से जाता है, हर चीज क्रॉस करता है। ठीक है, अब मैं इसी कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, अब आप समझोगे आईएनओ क्या है, इंडियन न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑब्जर्वेटरी क्या है। अंटार्कटिका का मैंने बताया, यूपीसी हियर, तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीसी हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट्स लुक एट हियर, इफ आई जस्ट गो इनटू दैट, लुक एट हियर, this one, ice cube, neutrino particle observatory. This is the one. साउथ, उसके दौरान this is the one. ये बाहर, और ये देखो जो है साउथ पोल में जो है, एंड व्हेन यू गो टू हियर अबाउट अस, है ना, you go to here, you'll find about the ice cube. This is the one. बर्फ के नीचे ये लैब है, what you see right now, it's all inside here. See what is given here, ice cube neutrino observatory is the first detector of its kind, South Pole. अगर हमें न्यूट्रिनो पार्टिकल को स्टडी करना है तो हमें न्यूट्रिनो पार्टिकल के स्पीड को कम करना होगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल को धीमा करना होगा, वी हैव टू स्लो डाउन द न्यूट्रिनोस, एंड देन द डिटेक्टर सेंसर विल कैच एंड वी विल बी एबल टू स्टडी, राइट। ये चीज यहां पर है, और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी आता है। यहां पर जो है इसको साइंस जो है, नाउ सी हियर, रिसर्च हाईलाइट, ये चीज है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, राइट। ये सारा उसके कॉन्टेक्स्ट में आता है। कैन यू सी हियर डार्क मैटर, है ना। तो ये चीज है न्यूट्रिनो के बारे में जो यहाँ पर है, ये जो मैंने बताया यहाँ पर। अभी इसमें ये जो मैंने अभी समझाया यहाँ पर, अब हम लोग आयनों का पढ़ेंगे, है ना, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है, आयनो है, दूसरा ऑब्जर्वेटरी इज आयनो। नाउ वेयर आयनो इज बीन मेड, दैट इज इन there is a hill called Bodhi Hill. Bodhi Hill is in Tamil Nadu. Inside, we have developed there. Inside Bodhi Hills, and that is a part of Theni district. It was in the news because being an ecologically sensitive area, is a part of the Western Ghats landscape. कहां पर है ये? Western Ghats landscape में, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ ये पहाड़ जो है, दिस पहाड़, दिस अ हिल, राइट, within the hill here, inside the hill, deep inside the hill, this lab is there. So whatever neutrino particles are coming, whatever neutrino particles are there, which is coming from outer universe, right, that will be caught, and studied. यहाँ पर detector है, under the ground, within the hill, the detector is there. All these neutrinos which are coming from universe will be captured and studied. ये क्यों न्यूज में था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ने, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
this project was kept on hold. But again, given the fact that it will help our astronomy, astrophysics, our scientific knowledge, research to advance, it has been given the clearance. इसको अब clearance दे दिया गया. अब यहाँ पर क्या किया गया है? What has been done here? There will be this lab. Right? This lab, if you look at, this lab will have, within this lab, there will be thousands of magnetized. Right? This will be magnetized. यहाँ पे बोलते हैं magnetized होगा. Magnetized iron, Fe. Iron, यहाँ बोलते हैं इसको, ये collimator will be there. Is an instrument. This is made of iron, you know, this is iron are there. Iron sheets are there. So what will happen? As a neutrino will come there. As the neutrino will enter. And as the neutrino will enter here. So this will be prevented, stopped. Neutrino will stop. And again, the rock here, the rock of this of hill, Bodhi hills, is a very hard. You know that you all know that our South India, Deccan, Southern India is made of granite. You know granite. Granite पता है ना, rock होता है ना, तीन तरह के rock होते हैं, igneous, sedimentary, metamorphic. तो hardest होते हैं. और वो क्यों बना है हमारे साउथ इंडिया में, क्यों है? Because of, you know that, lava trap, Gondwana. So you require some hard thing, which can stop neutrino to pass. Neutrino को pass करने के लिए आपको hard object चाहिए. अब यह क्वेश्चन ये उठता है ना कि यहीं पर हम क्यों कर रहे हैं? Why this hill? कहीं और भी कर सकते थे. Any other place would have done there. So it is made of hardest rock. What is made of? Hardest rock. सबसे hard rock यहाँ पर है बोधी हिल में. लेकिन यहाँ पर क्या चीज है? ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स का लैंडस्केप है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी यहाँ पर है ना? इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात है. You have to लिख द जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, जो इको सेंसिटिव एरिया. So that's where this project was under hold. लेकिन हमें रिसर्च भी करना है. We need to do the research also, right? तो अब उसका क्लियरेंस दे दिया गया. Now it has been given the clearance. ठीक है, इसको क्लियरेंस दे दिया गया. Are you all able to understand? So one question could be asked in the exam on this. Indian Neutrino Particle Observatory, INO. समझ में आ रहा है? Are you able to understand? You have any doubt, you can ask me. मैं एक एक चीज को ब्रेक कर करके समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन, वो चीज दिखना चाहिए. अब आप देखो यहाँ पर क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है. मैं डाउट भी लूंगा मैं. नाउ लेट्स लुक एट हियर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है. अब मैं इसमें बताऊंगा. यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, INO, राइट, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी. अभी ये न्यूज में भी था, ये चीज है, इसका वेबसाइट है. सी हियर दिस वन, ये दिख रहा है ये. अभी मैंने बताया ना, मैग्नेटाइज आयरन कोलीमेटर. अभी जो कोलीमेटर बताया ये चीज है. जब न्यूट्रिनो इसके थ्रू क्रॉस करेगा, तो न्यूट्रिनो विल स्टॉप. ये साइंटिस्ट बना रहे हैं ऊपर. ये देखो ये चीज है, ये डिटेक्टर है, राइट. ये टीम ऑफ साइंटिस्ट है जो काम कर रहे हैं. देयर वर्किंग देयर. तो जब आप कोई चीज को देखते हो ना, आपको दिमाग में वो बात आता है यहाँ पर. और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये चीज है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो हम इंटरनेशनल कर रहे हैं. अबाउट अस अगर आप जाओ, अबाउट INO, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये चीज है. ये हो गया बोधी हिल. कैन यू सी? ये बोधी हिल है. दिस द हिल.
Inside this, we have created a tunnel. What we have done? We have built a tunnel. There is a tunnel which go inside this hill. There is a tunnel which goes inside the hill. You see here? Around the world जो दिया हुआ है यहाँ पर. What is INO? See here. 15 institutes have collaborated together. It's given here, this one. Where is located? I have already mentioned that. Bodhi Hill, see. Near Pottipuram village. What is the name of the village? Pottipuram. और यहाँ पे दिया हुआ है. Is 110 km from Madurai. You know Madurai? Which temple is in Madurai? Meenakshi temple. 110 किलोमीटर दूर है वहां पर ये जो साइट है. राइट. तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप चीजों पढ़ते हैं, अब ये न्यूज में क्यों था, अब देखो आप, ये न्यूज में क्यों था मैं बता रहा हूं. मैं ये न्यूज में इसलिए था. नाउ लुक एट हियर द हिंदू. ये न्यूज़पेपर है द हिंदू पेपर. लुक एट हियर. Just a few years ago, it was in the part of. Now, if you look at Tamil Nadu government's Supreme Court. Why? Because of the ecological sensitive area. Understanding the INO. Right? What will the Indian neutrino-based impact? Okay? The clearance part of it, NGT. If you take here, National Green Tribunal. See here. If you search here, NGT. National Green, you have it, this one. Indian based, if you look at here. National Green, this NGT, put a stay. Right? ये सब न्यूज में था. अब यहाँ पर ये चीज है कि when you are talking about this INO part of it, ठीक है? This INO which I mentioned here. Now let's look at here. You'll find here. It's a mega science project. Right? What is here? It's a mega science project. It's a mega science project there. You'll find here. So now election year is started, you know. Campaigning started. इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? Today, it's an empty landscape, but within the next 5 years, this will be home to a path-breaking experiment in neutrino physics. The INO brings together the largest collaboration in Indian science so far. This includes 26 leading science institutions and over 100 scientists who are partnering with some of India's top industries. The collaboration is led by the Tata Institute of Fundamental Research, or TIFR, at Mumbai. The INO project will dig a 2-kilometer tunnel leading directly below a 1,300-tall rock mountain to build a unique underground laboratory. We are standing on INO land. This is about 26.5 hectares. Here, where we are standing, is where the surface facilities will come. The tunnel itself will start from the cement slab there. That is the marker for the beginning of the tunnel. And the tunnel from there will proceed like this. And you can see this white marker here is the next marker after that. And like that, you have the markers all along. And the tunnel will go underneath this mountain and stop below the peak. You know the peak there? And underneath that, it will stop. And that is about 2 kilometers of tunnel. And right below the peak, you have the laboratories at the end of this 2-kilometer tunnel. As cosmic rays pass through the sheer rock, most unwanted particles will get filtered out. The neutrinos will pass through effortlessly and enter the INO cavern. The biggest of the INO's 3 caverns will house the largest neutrino detector in the world, the iron calorimeter, or the ICAL. When completed, the ICAL will be a massive sandwich of magnetized iron and detector plates. Here's how it'll work. Chargeless neutrinos will pass through an immense magnetic field and transform into charged particles
known as muons. Depending on the muon charge, they will bend inside the powerful magnetic field. The charged muons will now trace a curved pathway of electrical signals. 30,000 highly sensitive detectors called resistive plate chambers or RPCs arranged in 150 layers will pick up the signals. 3.6 million electronics channels will carry the data to computer systems. This is the heart of the experiment that will study the properties of the neutrinos, continuing the arduous scientific quest that Wolfgang Pauli began in 1930. Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, a scientist whose name has been said here. Now, question is that this is a scientific research, and what is the name given here? Which is the nodal scientific organization TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले न्यूट्रिनो पार्टिकल रिसर्च नहीं होता था. Our scientists were studying neutrino particles even earlier also. I'll tell you one very important thing here. I'll just tell you one very important thing here. Very important information. There is a place in Karnataka called Kolar gold mine, you know, KGF. You know KGF? Rocky Bhai? Kolar gold mine. Under the mine, Kolar gold mine, we had a lab. We had a lab for neutrino particles. कहाँ पे? कोलार गोल्ड माइन, जहां पर माइनिंग करने के बाद खाली हो जाता है, तो वहां हमारा न्यूट्रिनो पार्टिकल रिसर्च का लैब था, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया. द गवर्नमेंट ऑर्डर टू क्लोज डाउन द माइन. और उसके बंद होने के साथ इंडिया का न्यूट्रिनो पार्टिकल रिसर्च बंद हो गया. बंद नहीं हुआ मतलब वो लैब बंद हो गया. तो इसके लिए आईएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियन न्यूट्रिनो पार्टिकल ऑब्जर्वेटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब देखो, अगर इस बार के पेपर में आ गया, इफ सपोज यू गेट द क्वेश्चन, so you will be lucky guy to solve the question, right? बाकी लोग क्या है? हवा हवाई. हवा हवाई. ठीक है. तो कुछ चीजें हैं ना, कुछ चीजें न्यूज में 4 साल पहले, 5 साल पहले, बट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, दोज हु राइटिंग द एग्जाम, राइट? तो मैं आप लोगों का देख रहा हूं. अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. ये तो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो गई, ठीक है. व्हाट अबाउट एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है न्यूट्रिनो पार्टिकल का? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राम. Can't neutrino particles impact at Antarctica by ice cube, and what will be the impacts? Nothing. Even your body now, neutrinos are crossing right now. Neutrinos are passing through everything. Every object neutrinos are passing through. There is no harmful impact. कोई harmful impact नहीं है. हाँ जी, बताओ मुझे. Tell me. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा न्यूट्रिनो पार्टिकल के फ्यूचर में? What will be impact? आज हम क्या कम्युनिकेशन करते हैं? What type of communication we have? We are using radio wave. What we are using? Radio wave. है ना, radio wave. All this travel with the speed of light. फ्यूचर क्या होगा? न्यूट्रिनो पार्टिकल कम्युनिकेशन. We can use neutrino particle as a mode of communication, right? Speed of communication also, yes. So if you look at, I'll just share the screen again. Now let's look at here. So what could be a practical application of this research? Practical application could be here, this one. So one will be this one. Used in communication. Extremely fast. No barrier.
It will cross every barrier. Second will be this one. Medical instruments. Where we can use it? Like today we have NMR, you know, NMR, nuclear magnetic resonance machine hota hai, NMR and all this. So we can use in biomedical or medical instruments. It will come there. Then this notepad is slow here. I've written here medical instruments. Right? In medical instrument will come. It's taking time there. Let me write here. When I'm trying to write there, so this notepad is slow. I don't know why the system is getting slower there. What I've written there is it will come up. System is slow there. Medical instruments. I've written medical instruments. Okay? Medical instruments वगैरह जो है, जैसे NMR वगैरह जो है, magnetic resonance. So we can use for imaging body parts. That could be a practical thing. अब यहाँ question आता है. Now the question is that, are we the only one in the world to do this kind of research? No. मैंने भी example क्या दिया? Ice cube. Right? International collaboration there. India is building INO. Even China. China is also doing the same thing. China is also building the lab. Japan. बहुत important है Japan. Super Kamiokande. Japan का जो है, just one second. Other observatories worldwide. One is very important, Japan. Japan has got this one. Super Kamiokande. That's the name of the lab. Next one is China. China has got Juno. Juno. See, one Juno is the spacecraft to study Jupiter. NASA spacecraft to study Jupiter. Another Juno is this one. Jiquan. Jiquan is a place. China में जगह है Jiquan. है ना? Jiquan underground neutrino observatory. Underground. U is underground. N is a neutrino observatory. मतलब इंडिया के साथ साथ चाइना भी कर रहे हैं और फिर वहां जापान भी आता है. Jiquan is a place in China where they're also building this kind of research facility. यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है. मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे भी न्यूट्रल पार्टिकल यूज हो सकता है. राइट? अब जैसे यहाँ मैंने जूनो बताया, चाइना को हमें कम नहीं आंकना है. चाइना इज ऑल्सो मच अहेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब ये चाइना का जो है जूनो, जूनो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो वर्ड देना है. चाइना, चाइना ऑब्जर्वेटरी. सी हियर. अच्छा, जियांगमेन है. आई एम सॉरी, जियांगमेन, नॉट जिक्वार, जियांगमेन. प्लीज मेक करेक्शन देयर. जियांगमेन. Jiangmen underground neutrino observatory. Right? Jiangmen is the place. That is where the lab they have. Okay? Now if you see here further, if I do this one, Super Kamiokande, Japan. This is the one. Can you see here? Super Kamiokande is a research experiment that aims to unravel the mysteries of the elementary particles and the universe through observation of neutrinos. Can you see the last word, neutrinos? है ना, neutrinos यहाँ पर है. ये कहाँ पर है? जापान में.
which Japan has got. ऐसा बनाया उन्होंने. They made this one. They've created this one. Right? So what I'm saying here, that you need to be aware. Now I'm coming to another topic, very, very important topic. Anybody in the classroom? What is dark sky reserve? That was in the news. Who will tell me dark sky reserve? कौन बताएगा dark sky reserve के बारे में? Yes, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया गया. कहां बनाया गया? लद्दाख. India's first dark sky reserve is created in Ladakh. There's a place called Henley. What is the place called? Henley. In Henley, we have a telescope. We have an observatory. Henley in Ladakh. India's first dark sky reserve. What do you mean by dark sky reserve? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इन्वायरमेंट से लिंक्ड है. ये लिंक विद इन्वायरमेंट. Let me ask somebody. Let me ask somebody. दशरथ, दशरथ, अनम्यूट करो आप. प्लीज अनम्यूट. दशरथ. Dasharath is not there. Let me ask. Rohit Gehlot. Rohit Gehlot. आप अनम्यूट करो. Okay. He is not responding. माधवी शर्मा. माधवी. यार राजस्थान के बहुत लोग हैं यहाँ पर. गहलोत वगैरह, आर्यमन गहलोत है. कितने लोग राजस्थान के हैं? How many are from Rajasthan? How many are from Rajasthan here? Dasharath in a hospital. Rohit Gehlot in library. How many are from Rajasthan here? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Who is this? Madhvi Sharma. Madhvi, yes. Good afternoon. Yeah, please tell me, what is this purpose of dark sky? Why? What is the how the dark sky is linked here? Dark sky is up. Any idea? Sir, it is to boost the astronomy tourism. Okay, you know Sir, that, that's right. What is a very yes, sir. important for any astronomical observation? We need dark sky. There should not be any glare. You know what is something called night glare. Now, what is happening in India? Because of urbanization, Yeah. the night sky has a glow. You know, something called glow. So in that case, observing universe, cosmos, particularly what? Particularly what? Galaxies. We are not able to see the part of it. So what is dark sky? There will be complete darkness. Complete dark will be there. Now, what is it? What is a very important thing linked with environment ecology? Light pollution. Light pollution. Now, light is a problem. You know, this, what you can see here is all light glare. And what happens? The light spread everywhere. Now, the night sky is not very dark. We have a haze, glare, glow everywhere there. Right? तो उसमें क्या होता है Yes. कि एक तो ये कि एस्ट्रोनॉमी के लिए हमें स्टार्स देखना है वन रात पे. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एनिमल्स, यू नो, माइग्रेटरी बर्ड्स, animals which basically retired, they get affected. Turtles, you know, marine turtles, for nesting, for breeding, they come to coast, and when the egg hatch, Yes, sir. they get attracted towards the light.
birds, they may go towards the light. And human health, that is health. Again, the pattern, the body clock, something called body clock, melatonin, sir. something called melatonin is a hormone. That pattern get disrupted. हो रहा है अभी, ये घटना हो रहा है क्या? लाइट पोल्यूशन कारण क्या कैंसर हो सकता है क्या? कैन इट रिजल्ट इनटू कैंसर? कैन इट बी अ फैक्टर फॉर कैंसर इन ह्यूमन बीइंग? माधवी? Sir, I'm not sure about that. There's a study has been done which has even linked that too much of light could be also a reason for cancer, Yes, human sir. cancer. क्या होता है कि when light is there, when the body physiology, inside the body, hormones and physiological things that get disrupted, and that can trigger uncontrolled vision, leading to tumor and cancer. Study has been. But why I'm discussing here dark sky reserve? That is in terms of astronomical observation. So Madhavi, you are very correct. For astronomical observation, for seeing the sky, we need dark. And India का पहला हैंडल में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारा, वहाँ टेलीस्कोप्स है, टेलीस्कोप हमने रखा है, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन किया गया. That's really important one. Well done, Madhavi. Thank you, sir. Where are you from? हाँ? Sir, Uttar Pradesh, UP. यूपी. कौन सी जगह से हैं आप? यूपी से कौन सी जगह? Sir, Saharanpur. सहारनपुर. गुड, वेरी गुड. Yes. अच्छा, मैंने पूछा राजस्थान के कितने लोग हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है. कोई जवाब ही नहीं दिया अभी तक. वो वहां पर है. दशरथ इज इन हॉस्पिटल. प्लीज टेक केयर ऑफ हेल्थ, दशरथ. Yes, memory power too also. Dipesh is saying here. Okay, anyway, now let me move on that so that we can cover more topics in today's class. Let me go into that one. All right. So dark sky reserve, what I've said here, that is where you have such kind of development there, right? I think screen is not coming now. 1 second. I'll again retry there. I don't know why. Now you can see. तो इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है ना, क्रिएट किया गया है. और अब जब आप नेट पे जाते हो, व्हेन यू सर्च अबाउट डार्क स्काई रिजर्व, वर्ल्ड वाइड बहुत जगह बनाया गया है. द लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर डार्क स्काई रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड. The lot of dark sky reserves are there. So you can see here. This is a Milky Way. Can you see here? This is a Milky Way. जब night sky, when you see here, you'll be able to see the Milky Way also there, galaxy there. The Ladakh. Continuous observation. This is a telescope, right? We have telescope here. But you can see these odd times of India. Everywhere it was Henley, right? Henley there. And you can see here, this is a Henley dark sky, right? In Henley, we have dark sky we have created. तो ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है. I'll not play the entire one, just a small part I'll show you there. Henley, we have telescopes, and this is what we have done there. Right in Ladakh there, in Ladakh. So you'll see in this document, I'll just play a small part of it. Now this is very important. Indian Institute of Astrophysics, IIA, this is the nodal scientific organization which maintain this telescope and manage this telescope. See, very important thing is given. Dalai Lama. But he said, we share the earth not only with our fellow human beings, but with all other creatures that live on the land, in the sea, and in the air. Urban cities are a testament to the technological advances that have defined human evolution over the past decades.
Across the globe, cities that never sleep are engulfed by the sights and sounds of rush hour traffic. This is what we have in urban areas. High-rise buildings dazzle like stars, illuminating the sky in spectrums of color and light. In all this evolution and chaos, we have forgotten to look up and appreciate the beauty of the night sky. है ना, the beauty of the night sky, वो हम लोगों ने भूल दिया. Far away from these cities, tucked amidst the breathtaking beauty of the Himalayas, Henley जो लद्दाख के दिया हुआ. Henley, a scenic village in the Changthang region of Ladakh, क्या नाम दिया is है? all set to Changthang. change the way we look at the universe. No, we have there Ramsar site also there. Changthang district. So Karb नाम है, which is one of the 80 Ramsar sites of India. Changthang is very important place in Ladakh. What you have seen right now, that is a Milky Way galaxy. Now this is the Himalayan range. What do you see from there? The land of high passes. Ladakh is a breathtaking, beautiful place. It's a traveler's dream and a bucket list favorite for thousands across the globe. It's dotted with monasteries. You know, This there are a lot of high Minar altitude cool desert boasts an abundance very of important thing, stunning cold desert. landscapes Cold desert biosphere reserve. and geological features analogous to those of faraway planets, making it an ideal I'm just moving ahead here. global issue. According to a study, 80% of the world lives under light-polluted skies, which adversely affect not only humans, but also our flora and fauna. Historically, our cities have never been as bright as they are today. Hanley is one of the world's most enchanting, serene, and breathtaking locations. You know what is this? What you have seen right now? Is performed by monks at the monastery, wearing colorful silk brocade robes and vibrant masks. Located around 250 kilometers southeast of Leh, in the Changthang region of Ladakh, serene and breathtaking location. What is this? Which animal is this? कौन बताएगा मुझे? मैंने इसलिए पॉज किया यहाँ पर. Yes, anybody in the classroom? I'm looking at your chat there. Good, very good. It's a wild ash. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ. Wild ash जो है is found in Run of Kutch. Where is Run of Kutch? Where is Run of Kutch? Run of Kutch is in Gujarat, and we have Indian wild ash. We have a sanctuary also there. Indian wild ash sanctuary, where we have this animal, Indian wild ash found. गुजरात में इसको घुड़खर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? घुड़खर. It's a beautiful animal there. Threatened species है, endangered species है. लेकिन ये बात मैं अपने environment क्लास में ये भी बताता हूँ कि लद्दाख जो है इट्स कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. इंडिया में 2 डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. एंड फ्रॉम द इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, लद्दाख इज हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी पार्ट. एंड देयर इन लद्दाख वी हैव क्यांग. क्या बोलते हैं उसको? क्यांग. और गुजरात में क्या बोलते हैं? घुड़खर. है ना, वो जो अभी आपने देखा यहाँ पर, व्हाट यू हैव सीन राइट नाउ. This is a Kyang wild ash. Right? Locations. And we procured a 2-meter telescope and set it up by late 90s, and it was operational from 2000 onwards.
Now this is our observatory. Located at a driving distance of 15 minutes What you from see the right guest now, house, that is a over telescope. a meandering road that offers a scenic view of the entire village, lies the Indian Astronomical Observatory aboard the Mount Saraswati. क्या नाम है, कहाँ पे, ऊंचाई पे, माउंट सरस्वती The बोलते हैं. impressive observatory dome ये houses यहाँ the पर telescope 2-meter यहाँ पर है. Himalayan Chandra telescope, चंद्रा named after टेलीस्कोप, the हिमालय Indian चंद्रा टेलीस्कोप. astrophysicist and Nobel laureate Dr. Subramaniam Chandrasekhar. चंद्रशेखर डॉक्टर जिसको नोबेल प्राइज है उनके नाम पे दिया गया है. दिस इज द लैब ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से रात के स्काई को देखा जाता है. Dorje and his team of engineers who are ऐसे खोला जाता है, पॉइंट आउट करके उसको स्टडी करने के लिए होता है. as the night sets in, the observation are in full effect. Now you can see universe. Astronomers use the telescope to gain insights into some of the most enigmatic objects in the night sky, with an unprecedented view of the universe. ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है. ये सारी जानकारी जो है हमें यूनिवर्स के बारे में अच्छे से पता करना है. इसके लिए डार्क स्काई का रहना बहुत जरूरी है. You need to have a complete dark sky. All the stars, galaxies can be observed. ये जो डोम है ये रोटेट One करता रहता है. major issue currently faced by astronomers is the significant increase in artificial lightning emanating from the surrounding villages and vehicles entering the area at night with high beam. This affects not only data collection at the observatory, but also the ultra-sensitive detectors of the Maze telescope that is recently commissioned at the foothills for research in high-energy astronomy. मेज, MAZE, मेज, वहाँ अफेक्ट होता है. ये जो Maze टेलीस्कोप है, of the Major Atmospheric Cherenkov experiment. मेजर एटमॉस्फेयर चैनल को The telescope एक्सपेरिमेंट, is among the MACE. largest state-of-the-art gamma ray telescope. और ये क्या है, रेडियो worldwide. टेलीस्कोप है. 164 segmented millimeters wide. mirrors forming a parabolic shape and 1008. ये जो चीज है वहाँ पे हमारे सनलाइट की वजह से हमें वो सब वहाँ पर जो गांव वाले हैं सारे वो कोऑपरेट करके during the रात many का of रिजल्ट the, बनाया गया है. program we ताकि रात के टाइम कोई भी so लाइट whenever we show the general public the moon for the first time, they get very much connected to it, and as a part of the Hanle Dark Sky Reserve, we intend to empower the villagers with telescopes so that they can show it or to all to themselves. They ठीक है. preparing their 10+2 and graduation, as well as some after matriculation. They Right. This is what I played here right now, so that you are aware of it. आपको जब भी टाइम मिले तो आप जाके इसको आप देखो आप अच्छे से. ठीक है, मुझे आप बताओ. There is one person लिंक विद लद्दाख, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, उनको मैक्सेसे अवार्ड दिया गया है. He is an engineer and is known for उनके लाइफ पे एक फिल्म बनी है 3 Idiot, where Amir Khan played the role. What is the name of the person? What is the name of real person? सोनम वांगचुक. What is the name? सोनम वांगचुक. उनको स्नोमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, आइसमैन. आर्टिफिशियल ग्लेशियर, पीने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर वहां पर है. ठीक है. लद्दाख इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी रीजन, लाइक चाइना. लद्दाख इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पर्पस. जैसे मैंने कोल्ड डेजर्ट बताया, गालवान वैली वगैरह, चाइना का LAC वगैरह वहां पर है. लद्दाख इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, बुद्धिज्म, culture, society. Ladakh has a multi-dimension. Ladakh is very important from geography. Ladakh is trans-Himalay. What बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Trans-Himalay, Trans-Himalayan range. वहां पर आता है. और लद्दाख पे भी मैंने क्या बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी. क्या है हमारा वहां पर, क्या है वहां पर हमारा टेलीस्कोप है. वी हैव गॉट अ टेलीस्कोप. क्या नाम है जगह का? हैनले. मैंने क्या बताया कि यूपीएससी क्वेश्चन सेटर जो होते हैं ना,
वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कंटेंट डेवलपर नहीं होते, दे आर बियॉन्ड। तो मेरी याद आएगी, यू रिमेंबर मी व्हेन ऑन द नाइट ऑफ द एग्जाम। उस समय एक और डार्क स्काई याद आएगा, ठीक है। वो होता है ना एग्जाम के रात वाली रात, वो काली रात, वो भी डार्क ही होता है, ठीक है। वो भी घना होता है, काला होता है, ठीक है। तो वहां उस समय याद रहेगा, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट मी गो टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, TMT. What I'm coming here? TMT. Who will tell me what is TMT? 30-meter telescope. 30-meter telescope. ठीक है। एक नाम आता है TMT सरिया, सरिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, तो वो TMT अलग है। ये TMT क्या है? ये TMT है 30-मीटर टेलीस्कोप। अभी आपने नाम पढ़ा ना, देयर यू हैव सीन मेस, MACE, लद्दाख हेनले, क्या बताया? 20 मीटर, 21 मीटर डायमीटर। वो जो उसका साइज होता है, डायमीटर जो होता है, उस पे यहाँ पर है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई 30-मीटर टेलीस्कोप इज इंपॉर्टेंट? इट वॉज इन द न्यूज, इट केम इन द हिंदू पेपर। ये सब हिंदू पेपर में आया अभी रिसेंटली, फिर ये हिंदू पेपर में आया हुआ है। वाई इज इक्वल 30 मीटर? 30 मीटर इज द साइज, डायमीटर, उसका अपर्चर साइज होता है ऑफ टेलीस्कोप, वो 30 मीटर है, ह्यूज है। कहाँ बिल्ड किया जा रहा है? इज नॉट इन इंडिया, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड कम्स अंडर USA। अब हवाई आइलैंड में एक जगह है, वहां एक हिल है, हवाई आइलैंड देयर इज ए हिल, इज कॉल्ड मोना किया। मोना किया, there's a hill there this particular, this telescope, 30-meter telescope that is being constructed. Right? TMT. अब यहां पे एक चीज समझना है, ये भी न्यूज में पहले था। क्यों ये न्यूज में था? इस पे प्रोटेस्ट हुआ था। देयर वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट बाय हवाईयन इंडिजिनस पीपल। हमारे देश में भी कई ट्राइबल पीपल होते हैं ना, हमारे देश में भी कई ट्राइबल पीपल होते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटी होता है। कभी जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, माइनिंग या कोई भी, तो वहां भी विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है। तो हवाई आइलैंड के कुछ जो वहां के लोकल ट्राइब्स, जो वहां के इंडिजिनस पीपल था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध किया था। क्यों किया? अगेन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगेन सच काइंड ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट विल हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, है ना, वहां भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, USA, कनाडा, इंडिया, है ना, जापान, 5 कंट्रीज का ग्रुप है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू पेपर में क्यों आया, वाइट केम इन हिंदू पेपर। लेट्स गो टू हिंदू पेपर। द हिंदू पेपर में ये इसलिए आया, मैं केवल आपको हेडलाइन दिखा रहा हूँ, केवल मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूँ, है ना। ये सारे दिस विल फाइंड इन करंट अफेयर्स मटेरियल्स, राइट। क्योंकि जो हिंदू पेपर में आता है वो करंट अफेयर्स मटेरियल्स में कवर किया जाता है, ये चीज है, ठीक है। 30-मीटर टेलीस्कोप, कैन यू सी हियर? ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, क्या लिखा हुआ है? डीप स्पेस। US, जापान, चाइना, कनाडा, इंडिया, 5 कंट्रीज है यहाँ पर। अमेरिका, कनाडा इज अ नेबरिंग कंट्री, हवाई आइलैंड से जुड़ा हुआ कनाडा भी है, और फिर जापान, चाइना, इंडिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर न्यूज में था, 2020 में भी न्यूज में रहा है, इंडियन एक्सप्रेस पे भी आया हुआ है, ठीक है। ये चीज है, इंडिया ज्वाइन द दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? मोना किया। अब आप ये देखो, ये चीज आया था लास्ट ईयर,
राइट, 30-meter टेलीस्कोप। और यहाँ क्या था, यहाँ पे जो मैंने बताया ना, प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन, देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। दिस वन यू विल फाइंड हियर, साइंस वर्सेस कल्चर, है ना, साइंस का कल्चर का जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएगा। वहां का मैटर जो है, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट है, हवाई का सुप्रीम कोर्ट, वहां तक मैटर गया था कि वेदर टू हैव दैट प्रोजेक्ट और नॉट, है ना, वहां प्रोजेक्ट का जो वहां पर है, तो वहां दैट मैटर वेंट टू दैट प्लेस देयर। एंड अगेन यू विल फाइंड दैट ये काफी न्यूज में रहा है वहां पर, इट वाज इन द ऑल न्यूज देयर। दैट इज वेयर यू विल फाइंड हियर दिस टेलीस्कोप, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हवाई, दैट वाज वेयर द मैटर। तो मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ, I'll not play everything. Just see the 30-meter telescope. telescope will be the largest telescope ever built in This is the how the Northern telescope will look Hemisphere. like. But what happens when science is in conflict with culture? Hello, everyone. I'm Christian Reddy, your friendly neighborhood astronomer, Right? Native Hawaiians gods, and therefore is considered sacred ground for some Sacred Native ground Hawaiian for groups. the Hawaiian people, Now we're going to talk where more about the where they are controversy surrounding constructing this particular meter telescope. diameter mirror. Each mirror is 1.4 meters The across, mirror is having but 30-meter only diameter. 45 millimeters. 30-meter diameter will be the System mirror. that will keep a Right? This is what the person Mauna explained Kea here. is higher and drop for BLNR So it's conducted higher, and you have a organization donate. If they do agree with this one. TMT, should TMT proceed to build atop Mauna Kea, or should they just go ahead and move it all over Still to that the matter. Canary Still Islands? the matter is Leave your thoughts in the comments that is below, still under and the I'll be question. sure to check them out. By the way, if you like telescopes, I've got some more videos on some of the giant telescopes Right. that are under construction right over here. So what is very important for the examination? You must know this name. Some facts you have to be aware. Right? जो मैंने अभी बताया यहाँ पर. And how many countries are there part of the project? So it is a USA because Hawaii Island. Neighboring countries Canada. Then Japan is also the part of the project. Along with Japan, China is also there. And the fifth country is India. Now it is what type of project? It's a mega science project. It's a huge telescope. It's a mega science project. India is collaborating with USA in number of such mega science projects. है ना, वहां पर कोलैबोरेट हम कर रहे हैं मेगा साइंस प्रोजेक्ट में यहाँ पर, राइट? तो ये चीज को ध्यान में रखना है. There is a very very important thing which I try to mention that. Are you all able to understand me? Whatever I am teaching in the classroom. ये सब योजना में भी आया हुआ, कुरुक्षेत्र में भी है, हिंदू पेपर कवर हुआ है. That will be a part of the question in the exam. And why it was in the news? Because of protest. ठीक है, कहां पर है ये? What is the name of the place? Mauna Kea. All right. So moving on, this is what I've done. Now let me come to the last part of it. ठीक है, जो लास्ट पार्ट है मैं बताता हूँ इसमें, फिर मैं कुछ डिफेंस के बारे में बताऊंगा. तो लास्ट पार्ट यहाँ पर है चंद्रयान 3 के बारे में जो है. I've already discussed Chandrayaan 3, but I'll discuss some instruments of Chandrayaan 3. Some of the important instruments of Chandrayaan 3, which is basically right already asked in the exam, but we don't know. If UPSC again go back to the part of it, then in that case we have to be aware of that, right? तो मैं एक काम ऐसा करता हूँ. Let me just I had a document there. Let me just any doubt you have till then? I'm looking in my iPad there so that anyway, not a problem. इसमें केवल एक चीज याद रखना है जो मैं क्लास में बता चुका हूँ कि मैंने क्लास में क्या बताया था. Chandrayaan 2 we failed in landing part, Vikram lander and the rover part, right? Now Chandrayaan 3 we were successful in landing to the part of it there, right? So what I would like to add here, I wanted to just add the name of the instruments that you need to be aware. So let me just add the names here so that you are, if in case any factual questions are asked, you are prepared with it.
है ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पर वो चीज़ है। तो ये चीज़ है, मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी हियर। इसके साथ स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग एंड करेंगे, विल गो टू डिफेंस हियर। ये चीज़ है, जो लैंडर पेलोड जो था, दिस आई एम टॉकिंग चंद्रयान 3 मिशन। से यहाँ एक चीज याद रखना है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर जो था, ऑर्बिटर वाज जस्ट propulsion system. What was that? Propulsion system to help landing Vikram with Pragya over the South Pole. मेरे कहने का मतलब है कि चंद्रयान 3 में जो हमने मॉड्यूल रखा, ऑर्बिटर और लैंडर रोवर था, तो ऑर्बिटर का काम क्या था? असेस करना लैंडिंग में, है ना। तो वहां पर तो लैंडर जो था, विक्रम लैंडर जो है, तो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट ये है, चेस्ट। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? चेस्ट। चंद्रा सरफेस थर्मल एक्सपेरिमेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के लिए था। फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लीसा, इल्सा, दैट इज अ लूनर सिस्मिक, यानी कि मून में जो सिस्मिक एक्टिविटी होता है ना। जब विक्रम लैंडर लैंड किया साउथ पोल में, इट वाज आल्सो मेजरिंग द अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक होता है तो मून क्वेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट ये है, लैगमोयर, लैगमोयर प्रोब बोलते हैं, एलपी, जो कि वहां पर सोलर का जो इम्पैक्ट होता है, सनलाइट का इम्पैक्ट या जो भी प्लाज्मा वगैरह जो है, उसको स्टडी करने के लिए। और इसमें एक और था, नासा के थ्रू इंस्ट्रूमेंट था ये वाला, अ पैसिव रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो कि नासा से था। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज गिवन अ पैसिव लेजर बेस्ड रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फॉर, वो था इमेजिंग के तौर पे था, है ना। 4 इंस्ट्रूमेंट थे लैंडर में। कितना इंस्ट्रूमेंट था? 4 था। 4 पेलोड, चेस्ट, देन इल्सा, एलपी, एंड देन कम्स लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, एलआरए। चेस्ट, इल्सा, एलपी and LRA, and LRA was given by NASA. Well, प्रज्ञा रोवर प्रज्ञा, उसमें क्या था? एक ये था APXX, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और एक था लिब्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब पहले लेजर लाइट से जो हमारा प्रज्ञा रोवर जो था, 6 व्हील्ड रोवर, इस प्रज्ञा रोवर। तो प्रज्ञा रोवर का क्या था इसमें? जो प्रज्ञा रोवर जो था, लैंड करने के बाद इसमें एक इंस्ट्रूमेंट था जहां पर लेजर लाइट, लेजर, तो लेजर से क्या होगा? रॉक्स एंड मिनरल्स विल ब्रेक डाउन। लेजर इज वेरी वेरी पावरफुल। एंड देन देयर इज अ स्पेक्ट्रोमीटर। इससे क्या होगा? टू स्टडी मिनरल्स, कि व्हाट टाइप मिनरल्स आर फाउंड इन द ऑन द मून, दैट टू स्टडी दैट, ठीक है। और यहाँ पर था एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, मतलब विसिनिटी ऑफ लैंडिंग साइट, लैंडिंग साइट के आसपास में जो है लिप्स था। और एक क्या था? एक्सरे पार्टिकल जो है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो वन वाज दिस वन, जिसको लिप्स, द इंस्ट्रूमेंट नेम वाज लिप्स। Another instrument was APXS, which generate X-ray, है ना। X-ray was used for doing the study. X-ray के थ्रू वहां स्टडी किया गया था, right? This X-ray to study that one. And what is very important, 2 चीज आपको याद रखना जो करंट अफेयर्स में आया था। एक तो प्रज्ञा रोवर ने टेम्परेचर मेजरमेंट किया था, there was measurement of temperature, and it was found that south pole of the moon has a lower temperature, right? Normally ये होना चाहिए कि that south pole of the moon should be lower temperature, but विक्रम and along with प्रज्ञा ये पता किया वहां लोअर टेम्परेचर नहीं है, हाई टेम्परेचर है।
अब सोचो आप, साउथ पोल है जहां पर सनलाइट का आना कम होता है, वो ठंडा होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग लो टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर हाई पाया गया। ये है ना, सी विक्रम लैंडर के पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर। कैन यू सी हियर, आई एम अंडरलाइनिंग द पॉइंट, कैन यू सी दिस वन, जो मैं राउंड कर रहा हूं यहाँ पर, विक्रम लैंडर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर। जब वहां का स्टडी किया गया सैंपल का, इट वॉज फाउंड वार्म। और दूसरा जो प्रज्ञा रोवर ने एलिमेंट पता किया, राइट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट मेनी ऑफ देम, इट वॉज ऑल इन द हिंदू पेपर। उसको स्टडी किया गया, उसको पता किया गया वहां पर, ठीक है। तो वहां पर जो पता किया गया, उससे पता चला कि क्या क्या वहां पे एलिमेंट है। मून हैज गॉट मेनी मेनी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स that was found by the instrument LIPS. What is the name of the instrument? LIPS, LIBS, LIPS, laser है ना, laser induced breakdown spectrometer। इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पता किया गया, वो यहाँ पर था, राइट, ये चीज था वहां पर। I'll share this one, ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव ये था। क्या मिशन का ऑब्जेक्टिव था? दिस वन, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ। पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या था? टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा क्या था? रोवर रोविंग ऑन द मून इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, है ना, ये सारा चीज किया गया था। I'll share this document so that you are able to see that, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आपको याद करके जाना है इसको। वहां से कोई भी क्वेश्चन आता है, then you have to prepare with that part. Now, one more thing which I would like to just add here, because then will become, all the discussion will become very complete. Complete discussion will be there. I've mentioned AstroSat, India's astronomical satellite, and now we have ExpoSat, X-ray polarimeter satellite. अब यहाँ पे एक नाम आया पोएम, POEM, पोएम 3, एक्सपोसैट का जो है ना। तो वहां पर जो है तो एक्सपोसैट में जो होता है, एक्सपोसैट में पोएम करके यहाँ पर, तो एक्सपोसैट इफ यू लुक एट, राइट, if you take the ExpoSat here, I'll just take it to that one. So let me just save this file. मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, so that you are aware of, मैंने फाइल को सेव कर लिया, चंद्रयान 3 वाला। तो now what I would like to add here, that ExpoSat, you should prepare with X-ray polarimeter satellite. AstroSat is very old, and there you can get question in the examination, because the Hindu paper and all things was covered there, and that could be asked in the exam, है ना, there you could get the question in the exam. So ExpoSat satellite जो है, तो let me just again give you something important part of it, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक्सरे सोर्स के थ्रू ब्लैक होल, क्या पता करना, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स। I'll just share this one. This is the one. तो दिस क्या यहाँ पर पहला है, इंडियाज फर्स्ट, सी हियर, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलारीमीटर मिशन। व्हाट इज हियर? पोलारीमीटर इज इंस्ट्रूमेंट, and it works with what? It works with X-ray. ये क्या पता कर रहा है? सोर्सेस ऑफ एक्सरे, है ना। तो यहां पर जो है, इसके अंदर जो, नाउ सी हियर, द स्पेसक्राफ्ट, 2 साइंटिफिक पेलोड, कहां पर है? लो अर्थ ऑर्बिट, लियो। पहला नाम क्या है? पोलिक्स, पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, है ना, ये दिया हुआ तो मीडियम एक्सरे। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? दिस वन, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, दोनों एक्सरे बेस्ड है, पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट जो है।
तो यहां पर जो है, नाउ सी व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, सोर्सेस का पता करना जहां से एक्सरे आता है। क्या क्या है ये चीज? पहला है ब्लैक होल। सी ब्लैक होल एब्जॉर्ब लाइट, but black hole emit X-rays. Then you see neutron stars, neutron particles. फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? गैलेक्सी के अंदर, let's say our Milky Way galaxy, there may be at the center of the galaxy, there may be some kind of monstrous black hole, giant black hole, some nuclei. वहां से pulsar. What is pulsar? Pulsar is basically pulsating star. And what is nebula? Made of gas and dust. What is nebula? Gas and dust. Pulsar is a pulsating stars. Right? उसको पता करना. So what are the part of given? Black holes, neutron star, active galactic nuclei, pulsar, then nebula. ठीक है? Is it clear, everyone? Now see here, this is the name of instrument. Raman Research Institute, they have made this. These two instruments are there. Right? ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है. इसके मेन एस्पेक्ट को जानना है, इसके मेन एस्पेक्ट. और 2015 में एस्ट्रोसैट था, मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट ऑफ इंडिया. मल्टी वेवलेंथ, विजिबल लाइट, एक्सरे एंड यूवी रेज. वहां पे बाइनरी स्टार सिस्टम, हाई एनर्जी इवेंट इन यूनिवर्स, एक्सरे सोर्सेस इन द स्काई. These were the objectives of which project? एस्ट्रोसैट, है ना? एस्ट्रोसैट का जो है, तो ये फॉलो ऑन मिशन है. क्या ये फॉलो ऑन मिशन है? 2015 में जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बनाया एस्ट्रोसैट, वहां भी हम एक्सरे, यूवी रेज, विजुअल लाइट सारा हम कर रहे थे. ठीक है? 5 साल का हमारा लाइफ टाइम था, बट नाउ वी हैव एक्सपायर्ड. नाउ वी हैव एक्सपोसैट टू कैरी ऑन द वर्क देयर. ऑल दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है? ये सारे चीजों को आपको अच्छे से पढ़ के रखना है वहां क्वेश्चन का. अच्छा, मैं डिफेंस का करना चाह रहा था एक्चुअली. संडे यू हैव अ टेस्ट. संडे यू हैव अ टेस्ट देयर. एनीबॉडी कैन ओपन देयर माइक एंड कैन टेल मी. संडे टेस्ट है आपका? यस. मेरा प्लान था मिसाइल वगैरह कवर करने का, मिसाइल और नेवल सिस्टम को कवर करने के लिए, जो नहीं हो पाया, which I was not able to do it. But I'll request you to read missiles. Right? मैं ऐसा करता हूँ कि quickly let me save this file and मैं ये फाइल्स मैनेजमेंट को मैं दे दूंगा. एक्सपोसैट और चंद्रयान 3 वाला, this both document you'll get there. What I would like to add here, just one second. I will show you this one. Missiles of India जो है. Let me see if I have got my documents. Let me just 1 second. I'll open my documents here. See, or yeah, आप ऐसा करना. What I would like to add here, कि you read all the missiles there. You know, Agni missile, BrahMos missile, Prithvi missile. कल हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन हो. You may have question from missile. I had already given to the management, है ना? तो मैनेजमेंट में सेट क्वेश्चन दे, उसमें क्वेश्चन वगैरह ऐड हो सकता है. तो वो आप एक बार पढ़ के जाना. यू जस्ट रीड दैट, राइट? उसको आपको रिसेंटली पढ़ना है वहां पर, तो मे बी पॉसिबल देयर, इट कुड बी अ क्वेश्चन देयर, है ना? लेट मी सी, अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट होगा तो मैं ब्रीफली उसमें ये चीज याद रखना, जब आप मिसाइल्स के पढ़ते हो, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल. यहाँ 2 नाम आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल. बैलिस्टिक मिसाइल इज ऑर्बिटल पैराबोलिक, क्रूज विच गोज इन द एयर, राइट? ये मैं पढ़ाऊंगा. आई टीच यू इन द क्लासरूम, डोंट वरी. आई टीच इन द क्लासरूम. बट मैं कहना, मेरा ये कहना, कल गलती से अगर संडे के पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. Although I'll teach you defense technology, है ना? Defense technology I'll teach you there. But suppose you get question 1 or 2 question tomorrow's
संडे टेस्ट, तो जस्ट टुडे रीड अबाउट मिसाइल्स, ठीक है। तो मिसाइल्स के बारे में पढ़ के आना है। जैसे आपको पता है अग्नि मिसाइल, क्या है अग्नि मिसाइल? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अग्नि 5 इज इंटरकॉन्टिनेंटल, फ्रॉम from India we can go to Africa, Europe. Then BrahMos, BrahMos is a cruise missile. India and Russia together has built, right? तो उसमें अभी ब्रह्मोस पहले हमने बनाया सुपरसोनिक, रेंज वाज 290 किलोमीटर्स, नाउ वी आर एनहांसिंग रेंज टू 400 किलोमीटर्स। और ब्रह्मोस का हमने क्या किया? हाइपरसोनिक वर्जन। व्हाट इज हाइपरसोनिक? मोर देन 5 मैक नंबर। व्हाट इज मैक नंबर? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक बार पढ़ के रखना। आपके पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक और मटेरियल टू रीड मिसाइल्स एंड ऑल? तो अगर नहीं है तो आप कोई भी जो भी आपको मिलता है आप थोड़ा नेट से सर्च कर लेना और मिसाइल वगैरह पढ़ के आना कल के टेस्ट के लिए। नाग मिसाइल क्या है? नाग मिसाइल ये बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेटर ऑन आई विल टीच यू इन डिटेल, डोंट वरी। बाद में मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक कल के पेपर के तौर पे उधर। नाग मिसाइल क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि टैंक को डिस्ट्रॉय करता है। फायर एंड फॉरगेट, राइट, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। तो ये सब एरिया को एक बार देख के जाना है कल के पेपर के लिए। और एक और एरिया डिफेंस का जहां क्वेश्चन आ सकता है, नेवल डिफेंस, नेवी, सबमरीन। वी हैव सबमरीन इन इंडिया। एक सबमरीन है अरिहंत। व्हाट इज आईएनएस अरिहंत? व्हाट इज आईएनएस अरिहंत? इज ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, है ना, फॉर नेवी, इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, राइट। और एक नाम यहां आता है स्कॉर्पिन, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। What is Scorpion class submarine? France. We have got from France. There's something called Project 75, Project 75I, where we have built six Scorpion class submarines, diesel powered, fast attack submarine. Kalvari, Khanderi, Karanj, Vela, Wagir, Wakshir. मेक इन इंडिया प्रोग्राम में हमने किया है। मजगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, एंड फ्रांस का नेवल ग्रुप मिलके बनाया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75। तो वो एक बार रीड करके जाना है। अरिहंत इज द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया। देन टॉर्पीडो। व्हाट इज टॉर्पीडो? जस्ट लाइक अ अंडर वाटर वेपन्स व्हिच कैन डिस्ट्रॉय शिप, सबमरीन्स। फिर क्या है? शिप्स वगैरह है। अभी हाल ही में न्यूज में क्या था? आईएनएस इम्फाल, इम्फाल, फर्स्ट वॉरशिप नेम्ड आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मणिपुर का इम्फाल पे नाम है। डिस्ट्रॉयर, व्हाट इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रॉयर्स, कॉम्बैट ऑपरेशंस। तो करंट में पढ़ के जाना, कल के क्वेश्चन पेपर में डिफेंस के भी क्वेश्चंस होंगे। मेरा टारगेट था उसको पूरा करना, लेकिन क्योंकि स्पेस का टाइम लग गया, आई वेंट वेरी डिटेल पार्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसीलिए, नहीं तो ये टॉपिक कवर हो जाता, ठीक है। बट आई टीच यू देयर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आई एम लुकिंग एट योर चैट बॉक्स। ठीक है, स्पेस वाला जो है डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा। आई शेयर दैट डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। कल कितने बजे टेस्ट होगा? एनीबडी? द मैनेजमेंट, कैन एनीबडी फ्रॉम मैनेजमेंट कैन टेल मी व्हाट टाइम इज द टेस्ट? इवनिंग। Pragati has given the answer, evening. Okay. What time in the evening you have a test? Sir, it's not decided yet. Not decided yet. And how many questions generally you get in test? How many questions are generally? Normally when you have a test, how many questions you get? और नहीं, आप ये दिस वन बॉय कॉल्ड निशांत कुमार कह रहा है चैट बॉक्स में कि वेपन्स को सीक्वेंस समझा दीजिए। इसमें टाइम चला जाएगा, इट विल टेक 1 hour। बैलिस्टिक क्रूज वगैरह जो है, I'll cover in separate class. I'll do it in a separate class there. तो अभी मैं वो करना नहीं चाहता हूँ मैं। He is asking, the Nishant is the student who is asking कि सीक्वेंस में वेपन्स को, उसको पूरा सीक्वेंस बताने में there are so many missiles we have got. It will take more than half an hour. So that I'll do it in a separate class. कल के टेस्ट के लिए पढ़ के जाना है। क्या लिखा हुआ है?
Yes, it is also volcano site, Mauna Kea. Mauna Kea in Hawaii Island is a sacred site of the Hawaiian people. It also volcanic site and all is given. But again, remember that if it was active volcano, government would never construct telescope. अगर वहाँ volcanic site होगा, ठीक है, तो वहां पर टेलीस्कोप बनाएंगे नहीं ना. हाँ, volcanic site होगा, but they have done the evaluation. पता चला कि volcano ही आ गया, तो पूरा का पूरा टेलीस्कोप ही खत्म. राइट, कई बार मीडिया में क्या होता है, न्यूज में कई बार गलत खबर भी होते हैं. यू नो दैट समटाइम मीडिया, आपको पता है मीडिया के बारे में बोलना, आपको पता है मीडिया किस तरह काम करती है ना, सच झूठ आपको पता है. वहां पर कई बार क्या होता है, मीडिया क्रिएट दोस काइंड ऑफ थिंग, एक्टिव वोल्केनो है ना, दैट साइट यूज्ड टू बी देयर, बट द गवर्नमेंट्स हैव डन द इवैल्यूएशन ऑफ दैट साइट एंड देन डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेलीस्कोप देयर इन Mauna Kea in Hawaii Island, TMT, 30-meter telescope. Neutral particle, can neutrinos be used in nuclear fission to hit heavy nucleus? For heavy nucleus, we use neutron. This Bapi Mishra, न्यूट्रिनो अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है. राइट, बापी मिश्रा. यूरेनियम, यू नो यूरेनियम, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, यूरेनियम इज हिट बाय न्यूट्रॉन पार्टिकल, विच न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, एंड अंडरगोज फिजन. मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रिनो. व्हाट इज न्यूट्रिनो? इवन द स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, is a subatomic particle which is very, very small, even smaller than neutron. Right? छोटा होता है. कई बार क्या होता है, मुझे पता है आपके बैच में कई लोग यहाँ पर क्या होंगे ना, बहुत पढ़ लिख के होंगे, यू नो, बहुत पढ़ लिख के आए होंगे, 3-4 साल से तैयारी कर रहे होंगे. मुझे रग रग से वाकिफ हूं मैं. आई एम. और कई बार होता है ना कि थोड़ा टेस्ट किया जाए टीचर को. I am very, very much aware of everyone. Right? I know about it. So when we have to split heavy nucleus, uranium and all this, when we use neutron. What we use? Neutron. Electron, proton, neutron. Neutron word आता है. Not neutrino. Neutrino is very, very small. It passes everything. अब न्यूट्रिनोस करने गए तो यूरेनियम को ही क्रॉस कर जाएगा वो. न्यूट्रिनो पास everyone there. There is a thing there. Okay, Madhavi Sharma, difference between proton and anti-electron. What is proton? Positive charge particle. Where proton is found? Nucleus of an atom. And what is the anti-electron? Positron. Madhavi, what is anti-particle? Same size, different charge. Electron is a, see, the 3 type of fundamental particles. कौन सा होता है? Electron, proton, neutrons. Chemistry में पढ़ा है ना? 3 particles: electron, negative charge, which is outside the nucleus. Proton is a positive charge, and neutron. And where do you find proton, neutron? Nucleus, central part of an atom. Hydrogen, helium, central part is the proton, neutron. Electron is outside. Electron is smaller than proton. And what is anti-electron? Anti-particle electron? Positron. क्या बोलते हैं उसको? Positron. What is positron? Same size of electron but positive charge. And what is proton? Proton is another fundamental particle found in the nucleus. Madhvi, unmute yourself. Unmute yourself, Madhvi. I know that questions will be there. I'm always there to answer your question. Proton is different, electron is different, and anti-electron is a positron. Electron, proton, electron, proton. Electron negative, positron. Electron, positron. Electron negative, positron, positive. And here is the proton, bigger size. बहुत सारे बच्चे है ना क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं.
You ask anything, I have an answer. Batao. Positron is also found in an atom. No, madam. No, sir. Satyajit Nayak. Normal matter, hydrogen, helium, carbon, oxygen, whatever, will be electron, not the positron. Where do you find positron? मैंने भी क्या बताया क्लास में? Antimatter. Antimatter contain antiparticles. अब जैसे antihydrogen will have positron. Are you getting that? What is hydrogen? What is hydrogen atom? One proton and one electron. So what is the antihydrogen? Antihydrogen, one antiproton and one positron. Antiparticle of electron is positron. They are unstable. Antihydrogen is unstable. Anyway, antimatter is found in the universe. Antimatter is found in universe, but we are not able to find them. So that is a mystery. We are trying to find it out there. Sai Charan, right? He's asking, where do you find antimatter? Antimatter is found in the nature, but they're comparatively less because what happened? Antimatter is unstable. They're not stable. And antimatter react with matter. Antimatter combined with matter. They will be unstable. Universe has got antimatter there also. Scientists are trying to find it out. NASA is trying to find it out. Right? NASA is trying to look out in universe to find antimatter, anti-hydrogen, anti-helium. That they are trying to find it out. Right? Galaxies and stars. Antimatter, they're made of antiparticles, but they are unstable. And normally what happened? Antiparticle and particle, antimatter and matter, they combine together. They annihilate each other. And that generates neutrino particle. What is generate? Neutrinos. Neutrinos particles. Is not a perception. Wrong word. Satyajit Nayak, person from Odisha, is not a perception. Is a reality. भ्रम नहीं है, सत्य है. ब्रह्मांड में एंटी मैटर है. ठीक है? Is not a perception. Is there in the universe. Right? Also some finding about it. There's a finding. NASA has found. NASA has detected antimatter. Where? Galaxies. Has already been found. And one indication of antimatter is a neutrino particle. I've given you in the answer there. I've written in the notes, antimatter can be studied through neutrino particles. And I've already mentioned ice cube, right? Ice cube experiment. Anyway, any more doubt is there? Acha, theek hai. See, I'll tell you one very important thing. I have found out 6 days time. I have covered the topic. मुझे 6 दिन का time निकाल के 6 दिन 5 days. I think 5 days, right? 5 days. We had a 5 days class, 10 hours class. I found out time to go for online. My future classes will be told to you by management. आपको मैनेजमेंट से मेरे आने वाले क्लासेस पता चल जाएगा. अभी तो मैं थोड़ा ट्रैवल करने वाला हूँ. I will be going around places there for my offline classes. तो जब कोई डेट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैनेजमेंट से. ठीक है? तो आप कल का टेस्ट दो. थोड़ा विराम है. मैंने स्पेस कवर किया. बाकी चीजों को मैं बाद में कवर करूंगा. I will cover the other topics later on, but you'll get notified by the management. All right. Anyway, shall we take the leave now? Yes, sir. Okay. So management will inform you the classes there. Please get my book, my science and technology book. You get that from the market. This will help you in the examination. जो लोग अगले साल भी अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी बुक इंपॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक विल बी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. जो भी मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ना चालू करना है. ठीक है? और जो लोग होंगे यहाँ पर, कई लोग मेरे फॉलोवर्स भी होंगे. यू कैन फॉलो मी wherever I am there in the social media. There always you can get updates about that.
ठीक है. The book name is Science and Technology, right? Oak Bridge. What's the name of the publication house? Oak Bridge. मैंने बताया था क्लास में एक बार, है ना? I think I've already told in the classroom there. That let me see if I have that one, then I can show you that. मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को एक बार ओक ब्रिज पब्लिकेशन का जो है. Let me see here. This book is there. With this will end up the class. Oak Bridge publication is there, 3rd edition. This is the book. Science and Technology from Inception to Advancement. Right? Oak Bridge. This is publication house. There you can get. You can directly get from the website of Oak Bridge also there. You'll find about the author, even recombinant DNA technology, nanotechnology, space technology, machine learning, AI, all things are given there. This is the book. Okay? All right. Amazon, Flipkart, everywhere it is available. Right? So most welcome. So we'll take a leave. You all are very nice students. Right? अब मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आया. I don't know, आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं. Whether you enjoyed it or not, I don't know that. Bhanu. Bhanu enjoyed it. All right. Bhanu is in the library. Right. All right. So I'll take a leave. Madam. Thank you so much, sir. Most welcome, ma'am. I'm always there. Right. So all the students will get back. You'll get the dates, right? And we'll meet there. All right, sir. Bye. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you.